हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। पीछे की जो वजह है वो वजह मुझे ऐसा लगता है नफरत और नफरत से निकलने वाला तल्ख यानी कि कड़वाहट है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में ये और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 35 सालों के बाद भी वो नफरत और वो तल्ख जो है वो कम नहीं हुआ है, बल्कि उसे बढ़ाने के काफ़ी ज़ोर शोर से प्रयास काफ़ी लोगों से हो रहे हैं और हर रोज़ हो रहे हैं। तो नफरत से क्या निकलता है, क्या पनपता है और कैसी तबाही बनती है और आदमी कैसी वहशियत और संगदिली की मिसाल छोड़ जाता है, ये दिखाना ये हमारी प्रेस क्लब के सारे जो हमारी कमेटी है हमें लगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसलिए हमने ये एग्जीबिशन यहाँ रखा है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हम सारे जो है इस क्लब के जो मेम्बरान हैं, हम किस्सा निगारी हमारा पेशा है, हम कहानियाँ लोगों के सामने लाते हैं। तो 92 और 93 के इस दंगे और बम धमाके को लेकर के दो वाक़ियात मैं आपको सुनाऊंगा। काफ़ी छोटे हैं, लेकिन उन दो वाक़ियातों ने मेरे दिल पर काफ़ी गहरे कुछ सबक छोड़े हैं और मैंने सबक लिए हैं उनसे, और मैं वो सुनाना चाहूँगा आपको। एक तो है जब दंगा बड़ी पीक पर था 92 का, मैं तब जर्नलिज्म में नहीं था, मैं यूनिवर्सिटी में एमए कर रहा था और पहली बार ऐसा कुछ देख रहा था और काफ़ी डर का माहौल था, मायूसी का माहौल था और अलग अलग खबरें कानों तक आती थी। तो यहाँ ईस्टर्न सबब में एक मानखुर्द नाम की जगह है, शिवाजी नगर गोवंडी, वहाँ पर एक बस्ती है, छोटी बस्ती, मतलब सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, आज भी वैसे ही है वो बस्ती। वहाँ का ये वाक़या है। वहाँ की एक महिला थी, औरत थी, शांताबाई पागराउत नाम की। मेरी माँ के साथ वो काम करती थी एक वीमेन ऑर्गेनाइजेशन में। बड़ी गरीब घर की महिला थी और बहुत ही साधारण अंग काटी की महिला थी वो। मुश्किल से कुछ 50 किलो वज़न होगा उनका। और दंगा बड़े पीक पर था और जो बस्ती थी वो हिंदू मुसलमान ऐसी मिक्स बस्ती थी। उसके जो नेबर थे, बाजू में रहने वाले जो झोपड़ा था, बाजू में जिस झोपड़े में लोग रह रहे थे वो मुसलमानों का था। शांताबाई पागराउत तो हिंदू थी और उनके शौहर जो थे, उनके पति काफ़ी बीमार थे कैंसर से और लास्ट स्टेज में थे और दंगा बड़ी पीक पे था और उनका जो है देहांत हो गया घर में ही। बच्चे जवान थे और उनकी यहाँ जान चली गई और बाहर दरवाजे पर जो है उसे काफ़ी बवाल सुनाई दिया, बड़ी शोरगुल सुनाई दिया। तो बाहर आके देखा तो बाजू के घर पे कुछ दंगाई आए थे नंगी तलवारें लेके। एक 15-20 लोगों का मॉब था और उस दरवाजे पर जो है वो तलवारें मार रहे थे, लात मार रहे थे। उस घर में एक मुसलमान औरत रहती थी और उसके छोटे बच्चे रहते थे। वो उसका शौहर जो था वो कहीं अरब में मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, रोने की आवाज़ें आने लगी। ये 70 साल की बूढ़ी जो थी, ये जाके उस मॉब के सामने खड़ी रही, उस दरवाजे के सामने, और बोला कि आपको अगर मारना ही है उनको तो पहले मुझे मारो, उसके सिवाय मैं हटूंगी नहीं। तो सारे जवान मुस्टंडे थे, हाथों में तलवारें थी, उनको लगा ये बुढ़िया क्या करेगी, तो काफ़ी गंदी गालियां दी,
थोड़ी धक्का मुक्की हुई, लेकिन वो वहां से हटी नहीं। उन्होंने कहा कि आपको मुझे मारना ही होगा। तो उसके बाद तो वो चले गए वहां से, और उसके बाद शांताबाई ने उस फैमिली को बाहर निकाला, अपने बच्चों को कहा कि जो मैयत है उसके शौहर की, उनके बाप की, उसके ऊपर नजर रखो। और उसके जो रिश्तेदार थे, मुमरा में रहते थे, वो अपने शौहर की मैयत घर पे रख के वो मुमरा उस फैमिली को लेके गई और उनके जो रिश्तेदार थे उनके पास छोड़ के आई। तो ये जो वाकया है, और ये 100% सही वाकया है, इससे मुझे सबसे बड़ा ये सबक मिला कि ताकत जो है ना वो आपके शरीर में नहीं होती है, ताकत आपके दिल में होती है। और आपके दिल में जो हिम्मत है और आपका दिल कितना प्योर है, उससे ताकत आपको मिलती है। वरना 25-30 नंगी तलवारें लिए जवान मुस्टंडों का जो दल है, वो एक 70 साल की बड़ी सी साधारण अंग काठी की महिला से क्यों डरता भला। तो ये सबसे पहला वाकया, और जिससे मैंने एक सबक लिया। दूसरा वाकया इसी दंगे से जुड़ा हुआ है। बाद में दंगा खत्म हुआ, बम धमाके हुए, और कुछ दिनों बाद जो है सरकार ने कमीशन बिठाया, जिसमें आज हमारे जो मेहमान हैं, चीफ गेस्ट है जस्टिस श्री कृष्ण साहब, उनके अध्यक्षता में ये कमीशन बैठा। फिर वापस कई कहानियां, कई बातें होने लगी। हम जवान थे, यूनिवर्सिटी में थे, अलग अलग डिस्कशंस होते थे, कई दोस्त थे, तो उसमें से कई बातें कानों पर आई। मेरे वालिद जो थे, पिताजी जो थे, वो बड़े पक्के गांधीयन थे। तो ऐसी कहीं सुनी बात मैंने एक बार उनसे कही कि ये जो जस्टिस श्री कृष्णा है, ये बड़े ही मजहबी आदमी है, ऐसा मैंने सुना, और ये रोज बड़ा पूजा पाठ करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ इससे निकलेगा। तो उन्होंने मेरे पास देख के कहा कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ और मतलब बददिमाग टाइप के आदमी लगने लगे हो मुझे। तो मेरा और उनका काफ़ी बहस होता था। मैं तो गांधीयन नहीं था, तो मैंने बोला कि नहीं, आप तो नहीं समझोगे। बाद में कमीशन का काम हुआ, कमीशन का रिपोर्ट आया, और सबके सामने पूरा सच खुल गया, और सबके सामने वो आ गया। फिर मैं पिताजी के पास गया और उनसे कहा कि नहीं, आपकी बात सही निकली, मैं गलत निकला। तो उन्होंने कहा कि देखो कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर मजहबी आदमी जो है, रिलीजन को मानने वाला आदमी जो है, वो कम्युनल होगा या फिरका परस्त होगा। अगर ऐसा होता तो जीना साहब और सावरकर जी जो है वो कम्युनल नहीं होते, क्योंकि वो तो ज़्यादा मजहब नहीं मानते थे, मतलब ऑलमोस्ट एथिस्ट टाइप के ही थे। और गांधी जी जो थे वो तो रोज प्रार्थना करते थे, अपने आश्रम में भी प्रार्थना करते थे, और मरते हुए भी राम का नाम लेके मरे। तो उन्होंने पार्टीशन के बाद भी ऐसे सेक्युलर मुल्क की कल्पना की और उसका निर्माण किया कि जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग मिलजुल के रहे। तो ये धर्म से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। जो हमदर्दी है, जो कंपैशन है, वो आदमी के दिल में जो है वो रहता ही है। वो किस कदर उसके बारे में सोचता है और देखता है अंदर झांक के, उससे ये तय होता है। तो ये दूसरा सबक मैंने ये लिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नुमाइश हमने की है, ये जो एग्जीबिशन हमने किया है, इससे आज की जो नस्ल है उसने कुछ सबक लेने चाहिए। क्योंकि हर बार सबक लेने के लिए इस तरह की वहशियत और संगदिली का सामना करना पड़े, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वो दौर हमने देखा है, और उस दौर के जो 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 खतरनाक और भयंकर परिणाम हमने झेले हैं, वो आज की नस्ल को नहीं झेलने चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो हमारे बुजुर्ग फोटोग्राफर्स ने जो अपनी जान जोखिम में डाल के उस वक्त जो काम किया है, और ये तबाही का मंजर जो आपके सामने लाया है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में जिस तरह का माहौल है, उस माहौल का नतीजा कितना भयंकर हो सकता है, ये सबक इससे सबसे बड़ी लेने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और आप सारे लोग बड़े ही विद्वान हैं, उससे ये सबक लेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और आप सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और मेरे साथी है हमारे प्रेस क्लब के सेक्रेटरी मयूरेश गणपति जी, उनको कहता हूँ कि आगे की जो प्रोग्राम की कार्यवाही है वो शुरू करें।
सनी मोमेंट। धन्यवाद समर। मैं हमारे चेयरमैन राजेश मस्करनस जी से विनती करूंगा कि जस्टिस श्री कृष्णा जी का स्वागत वो करें। सर, ये कोविड के दरमियान हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं उन्होंने एक सीरीज़ की थी और उस एक फ़ोटो सीरीज़ है ये कोविड की। तो डेफिनेटली आप वो देखिए कि हमारे फोटोग्राफर्स मुंबई के हर एक कोने में गए थे, मेमार रीजन में गए थे और वहाँ की तस्वीरें उन्होंने वहाँ पे खींचे। जिन 14 फोटोग्राफर्स के फ़ोटोज़ यहाँ पे एग्जिबिट हुए हैं जो लगे हैं, हम उन्हीं सीनियर फोटोग्राफर्स का भी एक छोटा सा स्वागत उनका करेंगे। मैं नाम लूँगा, प्लीज़ आप आइए और मैं जस्टिस साहब से विनती करूँगा कि उनको आप एक फेलिसिटेट कीजिए। दत्ता खेड़ेकर जी, ये दोन लाख गजानन दुधालकर जी, जयप्रकाश केलकर, मुकेश पारपियानी जी, प्रकाश पारसेकर जी, राजू काकड़े जी, संतोष निम्बालकर जी, संतोष निम्बालकर जी, शर्विन क्रेस्टो जी, सुधाकर रोवले सर, शेवटी घेतो सुधाकर गोवेकर, सॉरी, और रजनीश काकड़े। Thank you. I will request our chief guest, B.N. Shri Krishna sir, to express. After you have already seen this particular exhibition, so I'll request you to express few words. Yeah, please. Thank you. Yes, thank you. The chairman, secretary, all the members in charge of the Mumbai Press Club, na? That is how you describe it, and all the friends gathered here. Long ago, I don't know how many years ago, there was an exhibition of Holocaust in Los Angeles, which was inaugurated, and it's permanently there. So when it was inaugurated, I don't remember who was the person who inaugurated it, but he was asked this question and said, why do you have to perpetuate these bad memories among the younger generation? His answer was that it is twofold. You cannot wipe out history. I wish people would remember this. You cannot wipe out history. Number two,
it's a good model of what you should not become, what you should not do. These are the two ideas with which that exhibition has remained permanently in Los Angeles. It's not even in Germany, it's in Los Angeles, USA. Now, I hope that the exhibition that you have made me inaugurate today, and which I saw, which has been aptly described as 44,000 words, and it was explained to me that there are 44 photographs which are very striking, very telling, and as they say, each photograph is worth 1,000 words. That is why it has been described as 44,000 words. Now, something was said about how people behaved during that period. Samar was telling us two incidents in his life. Let me say two incidents in my life of how it affected me. First incident is, how did I come to be picked up for being the commission, the presiding judge of the commission? It's true, and I confess boldly that I am a religious man. I am a dyed-in-the-wool Hindu, there is no doubt about it. I love my religion, and that is why I am prepared to respect every religion in the country, whether this be Christian, Muslim, Isai, whatever it is. When I was asked, the then Chief Justice had this request from the government that a sitting judge should be appointed as a presiding commission, a judge of the commission. So she went through the list. There were about 20 or 30 persons on the list, and my number was only second or third from the bottom. So everyone said, no, I don't want to do this. No, I don't want to do this. And finally it came to my number. She called me and said, SRIKRISHNA, you have to do this. I was absolutely new. I was had about 1.5 years in office, and I didn't know what this was. I was a lawyer, dyed-in-the-wool lawyer doing only legal work. So I said, I don't know what is to be done. I am willing to take a challenge and do it. But I have one reservation. She said, what is your reservation? I said, look, I am a practicing Hindu and I make no bones about it. In fact, I carry my religion not on my sleeve but on my forehead. Every day you will find me sitting in the court with a tikka, big tikka on my foot and my head. So forehead. Do you think people will accept me as a good, impartial person? She looked at me for 50 seconds and said, let me ask you a question. When you sit in the court, when you don your robes and sit in the court, do you consider yourself a Hindu, Muslim, Parsi? What do you consider yourself? I said, no, I sit there as a judge and my job is to do judging, and I do it according to the oath that I have taken on the Constitution. Then he said, that's exactly what you are required to do. I said, thank you. And I've tried to follow her words, and by the grace of God and the cooperation of all the members of the press, I must really compliment them for the excellent work that they did during the entire 4.5 years. Both the print media and of course these photographers. I wish all these photographs were available to me. Then I need not have written 250 pages of report. I could have finished in 20 pages and said these are the annexures. This speech, one speaks 10,000 words. It was this vigilant press which gave me some hope, which gave some hope to the people of this city and people of this country actually, that there is a hope for this country. This was one aspect of my brush with the commission. The other, which is more personal, is there is a boy who is slightly deficient, not very high IQ. He also cannot hear, and he is not educated, nothing of the sort. He does go from house to house. If somebody has some work, he goes and does that very honestly and sincerely. He comes and washes my cars every morning very faithfully. And I'm talking the good old days even before the dangal started. So when the dangal started, he came to me, and he used to stay in some jhopadpatti behind the railway lines behind my house, about a mile away. He said, Sahib, I have a sister who is beautiful and 18 years old. I am afraid that her life and more than her life, whatever her honor is going to be at stake. Can you help me? I said, look, there is nothing I can do. I can assure you one thing,
there is a garage in which I used to park my car. I'll say, I'll take the car out, he'll give you the garage, tell that girl to stay here for the rest of the period till the things stand. She continued to stay there till the riots were over, and after that she came out, and then she probably went away or married or went away somewhere. Now, this was not because I was a commission. So I told him, he was afraid, and he said, even the garage may be difficult. I said, don't worry, the garage is very safe, because at that time, thanks to the efficient police department, I had about one Black Maria full of policemen armed, 40 policemen around my building. And I said, with this, I don't think any dangal wala will come in to bother you here. But as a sideline, I might mention that despite all the 40 policemen, somebody walked into my house and stole my VCR in those days. That is life, whether you take it as it comes. At least nothing happened to that lady. That lady was safe and she went away. Now finally, I don't know how many of you have had the patience to read through the report that was submitted in 1998 or 7 or 98. There is one particular verse which I have quoted from Shankaracharya, who is my guru. Shankaracharya says very interesting thing. He says, Tvayi mayi sarvatraiko vishnuhu vyartham kupyasi mayi asahishnuhu sarvatra tvam pashyatmanam sarvatrotsuja bhedajnanam. Beautifully he says, hey look, the good Lord, he called him Vishnu, you can call him Allah, you can call him Christ, you can call him whatever you want. Call him Mr. X, will do. The good Lord resides in you and me. So basically there is nothing, no different between us except this outward manifestation. Vyartham kupyasi, for no good reason you are angry with me, you want to fight with me, you want to hate me. Tvayi mayi tam kupyasi mayi asahishnu. He says you are jealous of me, you are intolerant towards me, and you are unnecessarily fighting with me. He says sarvatraika pashyatmanam. Why don't you see yourself in everybody that is around you and eliminate this concept of discriminative thing? Now that was the essence of the philosophy that was advocated by our great religious people, and unfortunately we are using those things to do exactly what they did not want us to do. Religion must unite people, because ultimately what is religion? Religion is your attempt to make some kind of a short circuit between you and the good Lord, make some connection between them. That is what I am doing, that is what you are doing, that is what she is doing, that is what everybody is doing. Ultimately we are all making a connection to that good Lord. We are somewhere, we will assume that he is somewhere sitting there. So why on earth are we fighting here? Ultimately, if it is the apex that we are going to reach, why on earth should be a differentiation? And based on differentiation, why should there be a dangal, a war, bombing? In those days, luckily the bombs were very little. Otherwise, you have what is happening in Russia and Putin, and these things will happen. It happens only because of this feeling of us and them, us and them, us and them. That is exactly what you must eliminate, and I am happy that these pictures will present to the younger generation the consequence of this vicious atmosphere that was created, and therefore it will be a model to not to do something in future, and hopefully the next generation will learn from it. The next generation will be more tolerant. Gandhiji did not like the word tolerant. He said, you don't use the word tolerant, it seems as if you are supercilious about it. They will learn to be more accommodating. They will learn to be more equanimous and carry on the message that Buddha taught us, Gandhiji taught us, everyone except the politicians taught us. Thank you very much. Before we conclude this event, it's our duty to say thanks to all those who worked hard to make this exhibition happen. First and foremost, a big thanks to Justice SRIKRISHNA for accepting graciously our invitation and coming here. Justice SRIKRISHNA has been always supportive to Press Club and Press Club initiative. He never said no to our invitation. We really appreciate you, sir. A big thanks to all the 14 photographers
who risked their lives to capture these tragic events, risking your life. And I heard that some of the key pictures played a bigger role later, capturing those culprit and punishing them by police. Also, I heard that most of the pictures were in negative, but yet they took effort to convert or restore into a high quality prints, and your jobs are commendable. Thank you so much. A special thanks to Neeta Kolotkar for crafting effective captions which gave life to all these pictures. Thanks, Neeta. And thanks to Praveen Garud also for designing this layout nicely. All those pictures were converted and put a higher resolution and designed by a designer called Praveen Garud. Thanks, Praveen. And also my sincere appreciation to our committee members, Samar Kadas, Ashish Rane, Rajnish Kakade and all the other photographers for an excellent coordination in a record time, speaking all those old photographers and bringing their pictures and curating 44 excellent pictures and putting together the exhibition. Thank you all. Also, thanks to our staff member, as manager, especially Chan, for putting up such a nice exhibition. And last but not least, thanks to each one of you for coming here today. Without your support, without your encouragement, without your engagement, this kind of press club events are meaningless. Thank you all. Thank you so much. And this event, this exhibition will run till 30th April. So you can ask all your friends, colleagues to come and see these events. Thank you so much. Yeah. I'll call all the photographers, that 14 photographers, you can take a picture with Justice SRIKRISHNA here. सरांचा बॅग मध्ये बुके मोमेंटो आणि बुके मोमेंटो और कौन है?